Now this ovary develops into fruit and this ovules develop into seeds. तो जो ओवरी है वो डेवलप होके फ्रूट बनता है और जो ओव्यूल्स है वो सीड्स बनता है. व्हेन द seeds come and fall on the ground, then under favorable condition a new plant grows. Favorable condition, a new plant will develop. The zygote we already know, when the union of male gamete and female gamete develops into diploid zygote, it gets the nutrition. From where does it get the nutrition? Or the food which is stored in endosperm. तो जो ओवरी है, ये पूरा चीज़ को ओवरी बोलते हैं. ओवरी डेवलप होके क्या बनता है? फ्रूट बनता है, फल बनता है. और जो ओव्यूल्स उसके अंदर है वो डेवलप होके क्या बनता है? सीड्स बनता है. जब ये सीड्स आके ग्राउंड में गिरता है तो फेवरेबल कंडीशन में ये सीड में से नया प्लांट ग्रो होता है. जो जाइगोट जो रहता है, जब ये यूनियन, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूनाइट होता है तो जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है. और ये जाइगोट डेवलप कैसा होता है? बाय द फूड. जो फूड है वो एंडोस्पर्म में स्टोर रहता है, तो ये फूड की मदद से जाइगोट विल डेवलप. Now this is a sexual. Now next we'll be studying about the sexual reproduction in human being. Now this is a male reproductive system. It is very easy if you draw the diagram and study the different parts. So the notes also becomes very easy. You will know the different parts of the organ also. So in the exam sometimes they draw the diagram and you have to just name the parts. So always study by drawing the diagram, it will become much easier. तो हमेशा पढ़ाई करते वक्त डायग्राम ड्रॉ करके फिर पढ़ाई करना, तो नोट्स भी इजी हो जाता है, डिफरेंट पार्ट्स भी मार्क करने में इजी पड़ता है. अगर एग्ज़ाम में आया तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. नाउ दिस इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ दिस इज़ अ यूरिनरी ब्लैडर. Now this part is known as seminal vesicle. Now this part is known as prostate gland. Now this one is known as Cowper's gland. This duct, the duct over here is known as urinogenital duct. Now this is known as penis. This is known as the black part which I have shown in the diagram. This one is known as scrotum. Now this one, the oval shaped structure, that is known as testes. Above the testes there is something over here that is known as epididymis. Then this duct is known as what? Vas deferens. And this duct is known as what? Ejaculatory duct. Now where are the sperms produced? Sperms are produced in the testes. So testes is the place where the sperms are produced, and this testes is placed in a scrotum sac. This scrotum, the male reproductive system is in the abdominal cavity, but the scrotum is outside the abdominal cavity. Why it is outside the abdominal cavity? Because the temperature of the sperm should always be kept in a less temperature compared to that of the body.
तो जो टेस्टिस रहता है उसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कहाँ पे है, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, और लेकिन जो टेस्टिस रहता है वो स्क्रॉटम में रहता है, और स्क्रॉटम जो रहता है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहता है, क्योंकि जो स्पर्म्स का टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से कम में ही रखा जा सकता है, इसके लिए स्क्रॉटम एंड टेस्ट इज़ आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। नाउ in this sperms are produced and semen is there. Semen consists of what? Many liquid, that is secretion. Now one of the secretion comes from the seminal vesicle. So seminal vesicle secrete a secretion which passes through the ejaculatory duct. So seminal vesicle भी secrete करता है secretion जो ejaculatory duct से pass होता है। फिर prostate gland और corpus gland, prostate gland and corpus gland, both the glands secrete a secretion which passes through urinogenital duct. So prostate gland and corpus gland secrete a secretion which passes through urinogenital duct, and seminal vesicle secrete a secretion which passes through ejaculatory duct. And semen is made up of all the secretion plus sperms. तो सेमेन में क्या क्या रहता है, सिक्रीशन, जो ये तीनों ग्लैंड से आया है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड प्लस स्पर्म्स। अभी स्पर्म्स का साइज कितना है, 60 माइक्रोमीटर। सो लेंथ ऑफ द sperm is how much, 60 micrometer, but the duct is how much, the length of the duct is how much, length of the duct is 6.5 meters. So this sperm has to pass through such a small size of sperms, which has to pass through a long tube that is and that is nearly about 6.5 meters. So it needs energy to pass through this duct, and this energy it gets from the semen. Semen contains fructose. So from the fructose it gets the energy, and with this energy the sperms are able to pass through the various ducts over here. So remember this. And one more thing, in testes testosterone is also produced. It is a type of a hormone. Testosterone is a type of a hormone which is also produced in the testes, and this testosterone is the one chromosome or hormone which is responsible for the male reproductive organs. So male reproductive organs are formed due to testosterone. Now next is female reproductive system. The female reproductive system is also present in abdominal cavity. It consists of pair of ovary, one on this side and one on this side, a pair of oviduct, that is this and this, a single uterus and a single vagina. Now beside this they have a pair of duct also, that is known as Bartholinus duct. Now in the textbook it is given bulbourethral. Bulbourethral duct is present in male and not in female. So instead of bulbourethral duct you write down Bartholinus duct. So there is a pair of Bartholinus duct also. Now the ovary secretes ovum, or it is also known as oocytes. So it secretes only a single ovary secreted in a month, once from here and once from here. So alternately from each ovary they secrete a ovum every month. अभी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे है, एब्डोमिनल कैविटी में. इसमें क्या है, एक जोड़ी ओवरी, वन ऑन दिस साइड एंड वन ऑन दिस साइड, फिर एक जो पेयर ऑफ ओविडक्ट, फिर अ सिंगल यूट्रस एंड अ सिंगल वेजिना. इसके अलावा एक पेयर ऑफ डक्ट भी है, उसको बोलते हैं बार्थोलिनस डक्ट. टेक्स्ट बुक में बाल्बोयूरेथ्रल डक्ट दिया है, लेकिन ये बाल्बोयूरेथ्रल डक्ट फीमेल में नहीं रहता है, मेल में रहता है, तो उसको करेक्ट करके बार्थोलिनस डक्ट लिखो. नाउ दिस ओवरी सिक्रीट्स, ओवरी जो रहता है एक ही हर महीने में एक ही ओवम, या उसको ओसाइट भी बोलता है, सिक्रीट करता है, एक बार इधर से एक बार इधर से, ऑल्टरनेटली सिक्रीट करता है फ्रॉम ईच ओवरी. नाउ
The free end of the oviduct is funnel shape. You can see over here the free end of the oviduct is funnel shape. In the middle there is a hole. From this hole the oocyte or the ovum goes into the oviduct. In the oviduct there are hair-like structure which is known as cilia, which pushes the ovum into the uterus. So the cilia present in the oviduct pushes the ovum into the uterus. Now the male gamete is what? Sperms, and the female gamete is what? Ovum or oocyte. Now when a boy reaches maturity, sperms are produced. And it continues till their death. So it continues to produce sperm till their death. But that is not the case with female. The ovum is produced when the girl is born. 2 to 4 million oocytes are produced, but they are immature. When do they become mature? When the girl reaches maturity, the ovum also becomes mature. And when the girl reaches a maturity, the ovum gets matured, and at every month only one oocyte or ovum is released. And this continues till menopause. What is the meaning of menopause? When a girl reaches the age of 45 to 50 years, the reproductive system stops functioning. The reproductive system stops functioning. And the hormone which controls the reproductive system also stops. तो जो मेल गैमेट जो है उसको स्पर्म्स बोलता है, फीमेल गैमेट को ओवम बोलता है. मेल गैमेट जो रहता है स्पर्म्स कभी प्रोड्यूस होने लगता है जब भी बॉयज़ मैच्योर हो जाता है, तो स्पर्म्स स्टार्ट्स प्रोड्यूस होने लगता है, और ये कंटिन्यू होता है जब तक उनके डेथ तक. तो डेथ तक स्पर्म्स प्रोड्यूस होता ही रहता है. लेकिन गर्ल्स का ऐसा नहीं है. जब गर्ल जन्म होता है तो उसमें 2 to 4 मिलियन ओवम ने तो ओसाइट्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो इमैच्योर रहता है. जब भी गर्ल्स मैच्योर होता है तभी ओवम भी मैच्योर होता है, और हर महीने में एक ओसाइट रिलीज़ होता है. और कब तक ये रिलीज़ होता है? जब तक मेनोपॉज का स्टेज नहीं आता. व्हाट इज़ मेनोपॉज? मेनोपॉज का मतलब क्या है? जब भी गर्ल 45 to 50 ईयर्स का हो जाता है तो मेनोपॉज एज आता है, तभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन करना बंद हो जाता है, और हार्मोन जो कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो भी स्टॉप होता है, नहीं तो इर्रेगुलर हो जाता है. और इर्रेगुलर जो मेनोपॉज का जो oocyte है, it loses the ability to divide. Therefore, mitotic division is also incomplete. And if such a oocyte get fertilized, now what is the meaning of fertilize? अगर oocyte और sperm दोनों भी यूनाइट हो गया या यूनियन हो गया इन दोनों का, तो ऐसा फर्टिलाइज एग जो रहता है, जो oocyte ज़ाइगोट जो रहता है, वो एबनॉर्मल चाइल्ड प्रोड्यूस करता है. दे प्रोड्यूस एन एबनॉर्मल चाइल्ड.
they suffer from abnormalities like Down syndrome. तो अगर ये ओसाइट जो मेनोपॉज का जो ओसाइट रहता है, अगर ऐसा ओसाइट वो डिवाइड करने का एबिलिटी लूज़ कर देता है, यानी माइटोटिक डिवीजन उसका इनकम्प्लीट रहता है, और अगर ऐसा ओसाइट स्पर्म के साथ यूनियन होके फर्टिलाइज होगा तो वो जाइगोट भी एबनॉर्मल रहेगा और चाइल्ड भी एबनॉर्मल रहेगा और उसको डाउन सिंड्रोम जैसा एबनॉर्मलिटी से सफ़र करता है.